अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, पसे पर्दा में मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम इरफान ताहिर, जिसमें हम बात करते हैं सुनहरी यादें, हालात हाज़रा, शख्सियात का तारुफ, मज़हब और बैनुल मज़ाहब हमआहंगी की। और उसके साथ साथ जो है बहुत से नित नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज एक बड़ी ही अहम हमारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, बड़ी नायाब शख्सियत की मालिक है, और उनके हवाले से उनकी ज़िंदगी के नशे व फ़राज़, उनकी ज़िंदगी की जो लाइफ जर्नी है, उनकी जो बैकग्राउंड है, उस हवाले से हम जानने की और आप तक जो है खातिर ख्वाह इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं बिला तख़ीर जो है अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ सना कारदार जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि बायोमेडिकल साइंटिस्ट है, और इनकी क्या ज़िंदगी के नशेब व फ़राज़ हैं, क्या शब व रोज़ है, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। सना, पहले तो मैं अपने शो के अंदर आपको पसे पर्दा में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। थोड़ा-सा आप अपनी ज़ुबानी जो है अपना तारुफ़, अपना बैकग्राउंड बताइएगा, आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान कहाँ से है, और क्या किस घराने से आपका ताल्लुक है, वो थोड़ा-सा जो है हमारे सुनने देखने वालों को बताइएगा। थैंक यू सबसे पहले तो मुझे ये मौका देने के लिए, अपने शो पे आने के लिए। मैं सना कारदार हूँ और पाकिस्तान में हम लोग लाहौर से हैं हमेशा से ही। मेरे फोर फादर जब सेंट्रल एशिया से सब कॉन्टिनेंट में आए तो दे सेटल्ड इन लाहौर, एंड उस टाइम पे रंजीत सिंह के अंडर उनके पास 2 मिनिस्ट्रीज थी, जिसकी वजह से उनको ये खिताब कारदार, जिसका मतलब है ओनर ऑफ द प्रोविंस और द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, मिला, क्योंकि पंजाब की 2 बड़ी मिनिस्ट्रीज उनके अंडर थी। और एक ही कारदार फैमिली है पाकिस्तान में और इंडिया में भी, क्योंकि वो हमारे ही रिलेटिव्स हैं जो वहाँ पर भी रहते हैं। मेरे फोर फादर्स या अंकल्स या ग्रैंड अंकल्स, ग्रेट ग्रैंड अंकल्स हमेशा से ही बहुत एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में, स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में। अब्दुल हफीज़ कारदार जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्रिकेट कैप्टन थे, वो मेरे फादर के अंकल थे। The only cricketer who's ever played for the undivided or the British India एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए वो इस कंडीशन पे खेले थे कि उनको कैप्टन बनाया जाएगा, एंड ही डिफीटेड इंग्लैंड एट द लॉर्ड्स इन द 50s टू गेट पाकिस्तान द टेस्ट स्टेटस। उनके हाफ ब्रदर अब्दुल रशीद कारदार, ही वाज, वो महबूब खान जो फिल्म मेकर हैं उनके हमसुल्फ थे। वो लाहौर से कलकत्ता गए और वहाँ पर उन्होंने ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी स्टार्ट की। उसके बाद जब बॉम्बे एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बन गई थी, तो फिर he traveled to Bombay and he started working as a filmmaker. He also acted in a couple of movies. He introduced a lot of famous actors and singers of that time. He was very close to Naushad and Sahil Lodhianvi. He worked with Dilip Kumar, Madhubala. Suraya was introduced by him, and Muhammad Rafi got his biggest break. The song that made Muhammad Rafi was from Kardar's Dastan, सुहानी रात ढल चुकी। इसके अलावा उनकी फेमस दिलीप कुमार के साथ जो मूवी थी वो थी दिल दिया दर्द लिया, which was an adaptation of Wuthering Heights. At one point he also bought the RK Studios, which was once Rashid Kardar Studios, जो अब Raj Kapoor Studios हैं. He stayed on and married in India, and he decided to stay there. But then the other family that was here, they also started working in film industry. And one of my uncles, Akhtar Jan Kardar, he made Pakistan's first movie, which was sent for the nominations of Oscars in the 60s, which was Jago Hua Savera. इसके अलावा अब्दुल हफीज़ कारदार जो थे वो एम्बेसडर भी रहे हैं स्विट्ज़रलैंड के लिए in the late 80s. उनके बेटे शाहिद हफीज़ कारदार, who is an educationist, he was the minister of he was the governor of State Bank of Pakistan for a while as well.
So this is the family I come from, and I'm very, very अच्छा proud to अच्छा, be a Kardar. ये तो ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके ख़ानदान के हवाले से। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि सना कारदार जो है कहाँ पैदा हुई, आपकी जो है एजुकेशन कहाँ से है और फिर कहाँ तक पढ़ी, वो थोड़ा-सा बताइएगा? जी, मैं लंदन में पैदा हुई थी और मैं 2 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स वापस लाहौर मूव कर गए थे। अ, हुँ, हुँ। और मेरी अपब्रिंगिंग लाहौर में ही हुई है। लाहौर के स्कूल्स में आई स्टडीड देयर अंटिल माय ओ लेवल्स। और हुँ, हुँ। ड्यूरिंग माय स्कूल जर्नी I did a lot of things, including playing squash for Pakistan, playing football. I worked as a journalist for a while as well. I shadowed one of the um, a sports correspondent for Indus TV. हुँ, हुँ। And also, I joined a peace resolution organization called Seeds of Peace. वो अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से वो कन्फ्लिक्टेड एरिया से लोगों को बुलाते हैं और एंड दे लेट देम स्पेंड अ समर कैंप टुगेदर एंड see the face of the enemy. So I'm involved with them until now. So that was my journey in Lahore. And after that, I moved to the UK. My father wanted me to be near my sister because she was playing for England at that time. And I started my A levels and then finally went on to do my degree in biomedical science. And initially, I was quite a spoiled child. सबसे बड़ी थी मैं घर में, पहला हुँ, हुँ। बच्चा थी, तो बहुत pampered थी, and I took life for granted until my father passed away in 2014, and that was the turning point of my life, and I started taking things seriously. जब मैंने डिग्री स्टार्ट की थी तब मैं कहती थी कि देखेंगे क्या करेंगे ये, whether I'll continue with biomedical science or I'll go and do something else. I wasn't sure. हुँ, हुँ। But then my father passed away, and I went, like, I really wanted to prove a point and study hard. उसके हुँ, बाद हुँ। मुझे ऑफर आई मेरे प्रोफेसर से कि I could shadow him in his research. Initially, I was grieving, so I did not take that opportunity, but eventually I did, and I'm absolutely हुँ, हुँ। loving what I'm doing. I work on women's health mainly. सर्विकल कैंसर पे रिसर्च कर रही हूँ, और मेरा खुद का इंटरेस्ट है एंडोमेट्रियोसिस में, जिसके ऊपर मैं इवेंचुअली रिसर्च और अपनी पीएचडी करना चाहूँगी। अच्छा, उस पे हम जो है वो बाद में आएँगे। आपके जो वालिद हैं, फ़ादर जो हैं, वो जर्नलिस्ट रहे हैं और ज़ाहिर है जी। आप भी घर में अगर जर्नलिस्ट हो तो बंदे का रुझान जो है वो ये बच्चे का होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को फ़ॉलो करूँ, अपने वालिद के जो है वो प्रोफ़ेशन को आपने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? उस तरफ कोई, यानी आपने इनिशियली जो है आपने बताया कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर आपने एक्टिविटीज़ की, तो उसको क्यों आपने लीव किया? उसके हवाले से थोड़ा-सा बताएँगे? 2007-8 स्पेशली पाकिस्तान में politically बहुत सेंसिटिव टाइम था, और उस टाइम पे ही आई वाज डूइंग ऑल दिस। माय डैड वांटेड मी कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, और उनको उनकी रिपोर्ट्स जो थी मैं प्रूफ रीड करती थी, या वो मुझसे अपनी रिपोर्ट्स भी लिखवाते थे, ताकि आई थिंक ही कुड सी दैट आई कुड डू दैट। लेकिन मेरी हुँ, अम्मी बहुत, I think she was scared. She thought कि उस टाइम पे the girls could not do it in Pakistan. She was afraid कि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए. So हुँ, हुँ, I actually applied for a mass communication course with journalism in University of Hertfordshire, and I actually got admission in the second year without doing my A levels or anything हुँ, based हुँ, on my work experience. But then क्योंकि हम पाकिस्तान में हमारे पास इतनी choices नहीं होती modules की, either it's हुँ, हुँ, bio or computers. तो I had taken bio, and फिर I thought कि I'll do biomedical science, और उसमें भी एक option थी हुँ, scientific journalism की. हुँ, हुँ, I thought if I do that, I could maybe become a scientific journalist, maybe do the specialization in that. So ये सोच के मैंने अपनी degree start की थी, but eventually I have gone into research because that's what I love right now. Although my dad would have loved me to be a journalist, so somewhere maybe down the road, if I think that I'm just getting bored of science, then I'll probably do that. यानी जर्नलिस्ट हों के साइंटिस्ट तो नहीं बन सकी लेकिन बायोमेडिकल साइंटिस्ट बन
बिल्कुल। लेकिन अभी भी आई राइट रेगुलरली इन डिफरेंट you know magazines and stuff or websites पे I do blog and write a lot. तो आपका जो अपना फील्ड है बायो मेडिकल साइंटिस्ट के तौर पर, इसको थोड़ा सा आप फर्दर एक्सप्लेन करेंगे? ज़ाहिर है कुछ लोग जो है इसके हवाले से नहीं आगाह, तो उनको भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें आप लोगों की क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या करते हैं जो बायोमेडिकल साइंटिस्ट है। बायोमेडिकल साइंटिस्ट और बायोमेडिकल साइंस जो डिग्री है एक बहुत ही वास्ट डिग्री है, जिसके बाद आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कुछ लोग लाइक फॉर एग्जांपल अमेरिका में आपको 3 साल की डिग्री करनी पड़ती है मेडिकल स्कूल में जाने से पहले। यूके या फिर पाकिस्तान या एनी कंट्री दैट फॉलोज द यूके सिस्टम डज नॉट हैव टू डू दैट, बट इन अदर कंट्रीज यू डू हैव टू। सो बायोमेडिकल साइंस इज़ अ फाउंडेशन डिग्री इन अ वे जहाँ से आप मेडिकल फील्ड में रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। कई लोग जिनके ग्रेड्स नहीं आते या जिनको सीट्स नहीं मिलती मेडिकल स्कूल में, वो चूज करते हैं बायोमेडिकल साइंस को। उसके बाद वो मेडिकल at any, I think after the first year they can go into medical school. So this lays the foundation of medicine. It's very vast. Different universities offer different kind of modules in biomedical. So इसमें you talk about genes, you talk about pathology, basically whatever you learn in the first year of medicine. इस तरह ये इसके ऊपर इसकी भी वही फाउंडेशन है। इसके बाद लोग either specialize कर लेते हैं कि कौन सी research करनी है। For example, if somebody wants to do a cancer research, so they'll do masters or PhD in that. If they just want to join medicine, they will just go into medicine. So इस तरह it opens up venue, an avenue for you to choose what you want to do. तो आपका जो पाकिस्तान में जो वक्त गुजरा है, फिर यूके के अंदर भी अभी आप वक्त गुजार रही हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस देखती हैं? वो ज्यादा अच्छा वक्त था या ये जो है ये ज्यादा बेटर लाइफ है? I think I had the best of both worlds. पाकिस्तान मैंने और लाहौर में मैंने वो टाइम गुजारे जब लाइफ was simple, life was happy, there was less tension, there was less issues, political issues or terrorism or whatever. बहुत कम था। लाहौर छोटा सा था और everyone sort of knew everyone. I think I've not gone back to Lahore for last 8 years now, so I hear कि बहुत बदल गया है, but I think I miss the old Lahore. वो जो nostalgia है 90s या early 2000s का लाहौर, I would always miss that. लाहौर में it will always be home for me, my first love, the city, not the people. In the UK, I think I have more freedom. I can go wherever I want to go without having an escort with me. I don't need somebody to come with me all the time. I have that freedom. I can do whatever I want to do without being worried about लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर किसी ने मुझे कहीं पर रात को लेट देख लिया तो वो जाकर मेरे घर पे शिकायत लगाएंगे. Not that my parents care, but you know how it just adds up to a lot of anxiety as well, कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा. Although जब मैं लाहौर में भी थी तो हम लोग जब स्क्वॉश खेलते थे तो we would roam around the country without having any fear, but here it's a little bit more freedom and I have my own voice that I can say whatever I want to without being worried. तो इसका देखिए, एक तो आपने इब्तदाई कहा कि लाहौर जो है वो ज़ाहिर है पहले छोटा था, अब वो या वहाँ पर आबादी बढ़ गई है, कंजेस्टेड हो गया है, क्या समझती हैं कि क्या यानी चेंजेस आई हैं वहाँ पर, और उसको फिर बेटर कौन कर सकता था, या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर अनसिक्योर एक सिस्टम है वहाँ पर, या अच्छी जो है वो सिस्टम नहीं है, तो आप क्या देखती हैं कि कौन लोग इसके रिस्पॉन्सिबल है? I think जो डेवलपमेंट हुई है या जो न्यू मॉल्स बने हैं, लाहौर एक्सपैंड हुआ है, वो उसमें आई थिंक इट्स गुड, लाइक मोर पीपल कैन कम इन. अब डाइवर्स हो गया है. वो पहले जो टिपिकल लाहौरी लोग थे सिर्फ वो रहते थे, लेकिन अब
दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। बट देन एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अकोमोडेट करने के लिए है या नहीं है। अभी आप देखें ईद गुजरी है और जिस तरह बारिशें हो रही हैं, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे कि वो पानी है और पानी के अंदर वो जानवरों का खून भी है। It gives rise to a lot of diseases, a lot of conditions, which is not healthy. तो आई थिंक ये गवर्नमेंट की या काउंसलर्स की या जो भी लोकल एमपीज हैं उनकी अथॉरिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करें। आप अगर लाहौर को एक्सपैंड करें, आप और सोसाइटीज बना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट्स वेरी गुड, बट यू नीड टू मेक व्हाट इज एग्जिस्टिंग उसको भी बेहतर बनाना है। I hear about incidents like basic necessities नहीं है लोगों के पास और लोग struggle कर रहे हैं। तो although these shopping malls और ये सब चीज़ों ने बहुत ज़्यादा job opportunities create किए हैं, no doubt, but are people getting paid for their services? Like जो skills उनके पास हैं उनके equivalent pay भी मिल रही है कि नहीं? That's where the problem is. So I think authorities have to take a note of that. सना, आप क्योंकि लाहौर के जो रहने वाले हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का हार्ट भी इसे कहा जाता है, फिर बड़े जिंदा दिलाने लाहौर होते हैं, वहाँ पर लेट नाइट तक जो है वो शॉपिंग चल रही होती है, खाने पीने और फिर फूड के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर उसका एक अपना टेस्ट है, वो भी अफादियत है। तो वो चीज़ें भी आप कभी कभार मिस करती हैं यहाँ रहते हुए? वो चीज़ें तो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। लाइक मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम लाहौरी हो तो तुम बहुत फसी हो अपने फूड के बारे में। लाइक मेरा एक दोस्त है यहाँ पर, वो हलीम के साथ चावल खाएगा और मुझे इतना गुस्सा चढ़ेगा कि you can't do that, that's wrong, you can't mix random food, and their answer is कि पेट के अंदर जाकर सब कुछ मिक्स हो जाना है। बट आई एम वेरी पर्टिकुलर कि what is to be eaten with roti, naan, or what is to be eaten with rice. So I do miss the authentic food of Lahore. I've not been able to find that in the UK. जो authenticity है, like यहाँ पर कोरमा जो होता है उसको they make it sweet. I've never had sweet korma in my life. So and the street food of Lahore, those chaats and golgappas and all that, and especially the corn भुट्टा जो हमें वहाँ पर मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ। और स्पेशली नाइट लाइफ आफ्टर 8 o'clock, वो the life becomes so vibrant, the city becomes so vibrant, and यहाँ पर after 5-6 o'clock everything is dead. So I do miss that. I used to live in Model Town near Bhaiye ke Kebab, which is very famous. So I do miss that. हम लोग रात को निकलते थे, we used to have dogs and we would take them walking and we'll sit there and have those things. But whenever I wanted food, we could just go out eat. यहाँ पर 10 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। So yes, I do miss that a lot. कि लाहौर में कभी आप किसी कभी टाइम जी, कभी इत्तेफाक हुआ फज्जे के पाए भी खाए आपने वहां पे? हाँ yes, so because मेरी my dad used to study in Central Model, जो बिल्कुल फज्जे के पाए के पास है, और हम लोगों का origin तो old city, the gated city से है, and we used to go there. We still have our house over there, so we go there all the time. And वहाँ पर जो अंदर वो हकीमों की दुकानें हैं, उसके पास हलीम वाला है और ये सारी चीज़। सना, आप सुन पा रही? जी सना। जी, तो ये हम सारी जी। चीज़ें बहुत शौक से खाते थे, और वो ओल्ड सिटी में स्पेशली जब जाते हैं तो भटूरे, हलवा पूरी, I am a big time foodie, so I वो miss the food in वो Pakistan. जाहिर है, वो फूड और वो टेस्ट और वो चीजें जो है वो जाहिर है इस तरह यहाँ अभी लाइफ चेंज। हाँ, स्पेशली मेरी दादी जब होती थी, वो हमेशा गेटेड सिटी में रही हैं, और जब दाता साहब का उर्स लगता था तो उसके ऊपर कतलम्मा और ये सारी चीज़ें होती थी जो यू कांट फाइंड एनीवेयर एल्स। So yes, we do miss that, yeah.
और लाहौर की क्या चीजें आप मिस करती हैं यहाँ पर? जाहिर है लंदन में आप रहती हैं इस्लाम के अंदर, तो यहाँ वो लाहौर के हवाले तो जाहिर है एक तकिया कलाम ये भी बड़ा मशहूर है कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमे ही नहीं। तो और क्या चीजें आप मिस करती हैं लाहौर की? तो यहाँ पे मैं किंगस्टन अपॉन थेम्स में रहती हूँ, विच इज़ अ वेरी वाइट एरिया. द हम्म, नियरेस्ट टू मी इज टूटिंग ब्रॉडवे, जिसमें थोड़ा बहुत हम्म, आपको वो पाकिस्तानी शॉप्स मिल जाती हैं. दैट्स वेयर आई गो टू शॉप माई देसी मसालाज और सब कुछ. हम्म, यू नो, आई मिस द चांद रात्स, जो पाकिस्तान की फेस्टिवल से पहले होता है. यू नो, एवरी वन गेटिंग टुगेदर और सब इकट्ठे आ रहे हैं. एंड आई रिमेंबर माई चाइल्डहुड कि हम लोगों के घर में भी, आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली विद माई ताया ताई जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था, एंड माई पेरेंट्स एंड माई दादी. हम्म, And everyone used to come to our house, my pupos and their kids, and everyone would come and they would spend the time there. But हम्म, you know, everyone is so busy in their lives that, you know, you don't even remember it's Eid and you have to call somebody. So I miss that gathering together, meeting friends, you know, going places, even though they were not, you know, if you compare it to the UK, they're not so many exotic places to go, like, you know, theme parks or anything. But हम Joyland जाकर के खुश हो जाते थे, Sozo World चले गए, you know, or just go to Model Town Park and have a day out, and it was fun because we were all together. There were simpler times. किसी को कोई agenda नहीं था दोस्ती करने हम्म, का या साथ रहने का. That I miss. वो छोटी छोटी markets and stalls, you know, इस टाइप की चीजें I miss them a lot. तो आप और आपकी एक जो और सिस्टर, वो जो स्क्वाश में भी रही हैं, बड़ी नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के खेलती रही हैं, स्क्वाश भी आपने प्ले किया, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे सुनने देखने वालों से शेयर कीजिएगा। मेरी बहन को स्क्वॉश का शौक हुआ था और उसने समर कैंप ज्वाइन किया था स्क्वॉश के लिए. um, हम्म, और जब समर कैंप एंड हुआ था तो रहमत खान, जो जहांगीर खान के भी कोच हैं, सलमा आगा के हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि ये आपकी जो बेटी है, इसका बहुत नेचुरल स्टाइल है, इसकी स्क्वॉश मत छुड़ाना, ये बहुत आगे तक जाएगी. मेरे फादर जो पहले इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, पहले थोड़ा बहुत कह भी रहे थे कि ये बहुत टफ गेम है, तुम लोग नहीं खेल सको, बिकॉज हम लोग बहुत डेलिकेट नाजुक सी लड़कियां थी जिनको घर में बहुत पैम्पर करके रखा हुआ था. सो देन माई सिस्टर वाज लाइक, नहीं मैंने खेलना. उसको थोड़ा पढ़ाई का शौक नहीं था, तो उसने सोचा कि हम इस साइड पे जाएंगे तो थोड़ा पढ़ाई से भी जान बच जाएगी. So then eventually my father started taking interest, और फिर वो वाकई कहीं वहाँ पर मारिया तूरपके भी थी. That's when they both started the career together, and she actually won in her category, and that gave her the boost कि खेलना है. फिर she continued playing, and she was when she was actually 12 years old, she was playing for under 19 and winning titles. She was definitely a better player than me. और मुझे सिर्फ गेम में पुश किया गया था कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही है, तो my dad did not want her to go alone, and he wanted her to be with somebody. So that's why I was pushed into the game and I started playing as well. She was the youngest member of Women's Squash, WISPA, Women International Squash Players Association, and she actually played with Nicole David, the world number one from Malaysia. She's gone to India to play, and then eventually she played for England, where she became European number 3 or England number 1 at one point. She's retired now, so I've retired as well because I had a knee injury and then my studies were too demanding. तो आपने स्क्वाश यानी शौकिया तौर पे नहीं, हादसाती तौर पे जो है वो शुरू किया और फिर छोड़ दिया इंसिडेंट के हाँ बाद? जी, हाँ जी, मैंने बस मुझे फोर्स किया गया था. But once I started playing, I was actually getting better than her. But then it was like everyone called her like Williams sisters. हम दोनों हमेशा फाइनल में होते थे, and then obviously being the bigger one, I had to lose. इंडिया जब गई आपकी सिस्टर, तो जाहिर है सानिया मिर्जा का भी नाम है स्क्वाश के अंदर, तो उनके साथ भी कोई खेलने का मौका मैसर आया कि मुलाकात? सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है. अच्छा अच्छा, ये यानी डिफरेंट आपकी डिफरेंट गेम, टोटली डिफरेंट गेम है. पर ठीक हो। उनसे रिलेटेड एक चीज ये हुई थी, जब
उनको भी स्कर्ट पहन के खेलने से मना किया गया था, और जो मौलवी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इशू बनाया था इसका. And same thing happened with us because my sister was the member of Vispa, and they had uniform you have to play like in Wimbledon. There is a certain dress code that you have to play in, and in Peshawar they were not letting her play. They wanted her to play in full. So then my father had to intervene and say that this is the thing, we can't do that, and she did not play that match, unfortunately. इंटरनेशनली भी आप लोगों ने प्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, आपने या आपके सिस्टर ने स्क्वाश के अंदर? मेरी सिस्टर ने किया है काफ़ी मैचेस में. एक पहला मैच जो था वो पाकिस्तान में ही हुआ था, वाकेंट में, वहाँ पर उसने रिप्रेजेंट किया था. फिर ये इंडिया वाले मैच में, ब्रिटिश ओपन में बहुत बार रिप्रेजेंट किया है, ब्रिटिश जूनियर ओपन में. So and then she was playing for European, because पाकिस्तान में थोड़ा फेवरेटिज्म आ जाता है, जिसकी वजह से वो फिर पाकिस्तान के लिए नहीं खेली. फिर वो इंग्लैंड के लिए खेल रही थी, जहाँ पर क्योंकि दे सॉ द टैलेंट एंड दे वर लाइक वी आर गोइंग टू टेक यू ऑन आवर टीम. और फिर वो इंग्लैंड के लीग्स खेलती रही है. इसके अलावा फिर वो यूरोप में उसने काफ़ी रिप्रेजेंटेशन किया, म्यूनिक, फ्रेंच ओपन, और इस तरह डिफरेंट ओपन्स उसने खेले हैं. तो अभी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या इस तरह की कोई एक्टिविटीज करती हैं? So I have a chronic condition, जिसकी वजह से मैं नहीं खेल सकती, पर मैं थोड़ा बहुत जितना फिट रहने के लिए खेल सकते उतना खेलती हूँ. क्या लाइक करती है? क्रिकेट, टेनिस, स्क्वाश, क्या चीज पसंद? स्क्वाश ही है जो मुझे खेलनी आती है, तो वही मैं खेलती हूँ. स्क्वाश अच्छी इसलिए क्योंकि उसमें यू डोंट नीड अ पार्टनर, यू कैन जस्ट प्ले ऑन योर ओन. So I think that's a very good game. So I just play squash every now and then whenever I can. अच्छा, ये बताइए कि आपका जो यानी ज़ाहिर है फैमिली बैकग्राउंड है, वो एक लिबरल फैमिली से आप जो है वो रिलेटेड रही हैं, तो इसके हवाले से आपको कोई हार्डर भी को पेश आई पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और यहाँ का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंस अगर हमारे देखने सुनने वालों से बयान करें? पाकिस्तान में ऑब्वियसली मेरे फादर को बहुत ज़्यादा, तब क्योंकि मेरे फादर जिंदा थे, और ही वुड नॉट लेट अस फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस. बट बहुत सारे लोग थे जो उनको कहते थे कि बेटियां हैं, इनको तुम स्क्वाश खिला रहे हो, इनको तुम इंग्लैंड भेज रहे हो अकेला, तुम सफ़र करोगे, तुम रिग्रेट करोगे. बट ही सेड दैट आई डोंट केयर, लेट देम लिव देयर लाइव्स, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम to live their lives, because you get one life and you don't know what happens in the future. So he gave us the freedom to do whatever we wanted to do, and he actually taught us that you need to learn from your mistakes, learn from your own experiences, and that's the best thing. अगर तुम किसी और के experience या किसी और के mistakes से you try to live your life, it won't be same. So that's how I have been brought up, and I was told to question things, do not believe in anything just because it's been told. And he has empowered us since we were kids. I remember, I think it may seem very trivial, या बहुत छोटा सा, but when we were 4 or 5 years old, he would tell us to go buy things from the shop while he would stand at a distance and watch us कि हम कितने पैसे दे रहे हैं, कितने पैसे वापस ले रहे हैं. And I think it was very empowering. वो confidence build किया उन्होंने. हम लोग 5-6 साल के थे जब उन्होंने हमें debates में डाला कि debates करो. He had this thing that your mind should not be idle, फारिग नहीं बैठना चाहिए. तो हमारी बहुत मिलिट्री रूटीन थी. वी यूज्ड टू डू म्यूजिक, वी यूज्ड टू लर्न हाउ टू प्ले कीबोर्ड. सो 4 बजे उठते थे, रात को 12 बजे सोते थे, एंड एवरी मिनट वाज अकाउंटेड फॉर. तो अभी अगर मैं कभी बैठी होती हूँ फारिग एंड आई एम लाइक, मैं बोर हो रही हूँ बिकॉज आई नीड टू डू समथिंग. आई हैव ऑलवेज बीन इन द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स. तो आई थिंक वहाँ पर मेरे फादर को बहुत सारी कि कोई शादी नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा. And my father was like, my daughters do not need a man if they are sustainable and financially independent. And he always said कि आपको financially independent होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि आपने शादी करनी है कि नहीं करनी. Because I don't want you to be dependent on somebody financially. And I think that was a very important lesson. And it is very important for all the women there.
अच्छा सना, आपकी हैबिट्स के बारे में अगर मैं पूछूं कि क्या आपको, क्या कौन सा मशगला जो है वो ज्यादा पसंद रहा शुरू से और अभी भी जो है, क्या एक्टिविटीज? Uh, I think Shah Rukh Khan. That's the one word that comes to my mind. Um, I was 3 years old when I fell in love with him, and I'm still in love with him. Other than that, I love music. So there's always music playing in my house, especially Muhammad Rafi. I remember the first time my dad played his songs, I was like, I don't like this because वो थोड़ा सा जिस तरह का sound quality थी 50s 60s में. But eventually it grew on me and I love listening to his songs, and I think जब मैं थोड़ा सा depressed feel कर रही होती हूँ, those songs lift me up. इसके अलावा I love reading. I read a lot. मैं इतना टीवी नहीं देखती. टीवी पे अगर कुछ भी देख रही हूँ तो वो सिर्फ शाहरुख की मूवी या उसके सॉन्ग्स होते हैं. But yes, I love reading. I love playing keyboard and listening to music. These are my hobbies, I'd say. I love traveling as well, but it has been limited due to my condition. कोई डायलॉग ही सुना दे शाहरुख का. उसने अभी देवदास के 30 years complete हुए हैं, तो I'll just say what he said in देवदास, sorry 20 years, कि मुझे तुम्हारी याद सिर्फ तब तब आती है जब जब मैं सांस लेता हूँ. ठीक है. अच्छा, मोहम्मद रफ़ी साहब को भी आपने सुना, हालांकि ओल्ड जनरेशन जो है वो ज़्यादा उनको लाइक करती है, न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन के अंदर कोई इतना ज़्यादा, हालांकि बड़े यानी गोल्डन बताया जाता है कि वो टाइम था म्यूज़िक का जब मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर या ये लोग थे. तो मोहम्मद रफ़ी साहब का कोई गाने ही गुनगुना के सुना दे हमें, जो गुनगुना मैं आपकी नहीं पसंद. सकती. मैं I'm not even a bathroom singer, but I do listen to a lot of songs. And choosing one song would be, criminal because I love all his songs. And वो different type के moods होते हैं. Sad songs हैं, romantic songs हैं, comedy songs हैं. So I love all his songs. Yeah, so I can't choose one song, but I think the first song that I heard of him was आज मौसम बड़ा सुहाना है. गुनगुनाना नहीं है. नहीं, वो नहीं मैं कर सकती. चलें, ठीक है. अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा सा कि आपका एक्सपीरियंस रहा, जाहिर है कि चर्चिज़ के अंदर भी आप गई, फिर हिंदू टेम्पल्स के अंदर डिफरेंट जो है, सिख टेम्पल या, तो उस वो एक्सपीरियंस अपना थोड़ा सा शेयर कीजिए कि वो अट्रैक्शन जो है कैसे बनी, किस पर्पस के लिए आपको जो है ये जाना पड़ा, क्या यानी लर्निंग प्रोसीजर था, क्या चीज़ थी जो आपको इस तरफ जो है रुझान पैदा हुआ? अगेन इसमें भी मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है. हम्म, मैं 6 साल की थी जब मैंने, आई थिंक क्लास 1 में थी, जब मैंने अपनी टीचर से पूछा कि व्हाट डज गॉड लुक लाइक, और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, एंड आई थिंक छोटे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं. हम्म, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, और मेरे जितने दोस्त थे उन्होंने सबने मुझसे बात करना छोड़ दी कि मैं किस किस्म के क्वेश्चन पूछ रही हूँ. जब मैं घर वापस आई तो मैंने अपने फादर को ये बात बताई, एंड ही वाज लाइक, वेल, गॉड इज इन एवरीथिंग गुड. God is in you, God is in me, and everything good you see around you, God is in that. तो एक ज़माने के लिए मैं समझती रही थी मेरे दादा अबू जो हैं वो he is the God, and मैं उनके पिक्चर के पीछे जाकर कार्ड्स और अपनी विशेस डालती थी. But then I was very young at that time. So I think that was very important lesson, that God is in everything good and He wants you to do good. उसके अलावा फिर as I grew up and I was taught to ask questions and not believe everything blindly. चाहे कोई कुछ भी कहे. And then फिर इंटरनेट का एरा आया जहाँ पर different informations available थी online, पर उसमें से you have to make that judgment कि क्या सही है क्या गलत है. कई बार मैं क्वेश्चन पूछती थी और वो टीचर्स मुझे डांट के बिठा देती थी कि ये नहीं पूछना चाहिए. उस पे फिर माई डैड, एंड देन बिकॉज हम लोग स्क्वाश खेल रहे थे और हमारा एक्सपोजर प्रॉबली हमारे पीएस से थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि हम लोग डिफरेंट रिलीजियस
लोगों से भी मिल रहे हैं, somebody who's coming from India or Malaysia or America, we're meeting these people. So then my dad said that if you are very curious, why don't you do this? You study Islam, you read Quran, you read it with tafsir, और उसके बाद start reading other religions to get answers and see where are the similarities and where are the differences. So my dad and I used to have a lot of discussions. फिर and the thing is, जब हम लोगों को छुट्टियां होती थी, हम लोग कभी relatives के घर नहीं जाते थे. We never went to our relatives' house. My dad would always take us to explore the nature. He used to say, Hazrat Ali का call है कि divide your life into 3 parts. One for the worldly works, one for the religious work, and one to travel and experience the nature that God has created. So he would take us traveling, and then there were times when we went to Nankana Sahib. We went to the Gurudwara. That was my first time in the Gurudwara. Then when I got involved with Seeds of Peace, I got opportunity to go to the temples, to Jewish worship places, Parsi worship places, churches, and experience the services they do there. So I think it was very enlightening to see different things and experience all that. And it gave me a lot of exposure. It gave me a lot of courage to accept others as they are without questioning or without telling them that I am right, you are wrong. Because in their eyes, I might be wrong. So, it's very important for coexistence and correlation. कंपैरेटिव यानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कंपैरेटिवली आपने कंपैरेटिव स्टडी भी एक किया है रिलीजियस के हवाले से, फिर खुद भी ऑब्जर्व किया है, तो इससे आप क्या समझती है, क्या गेन किया है आपने? एंड ऑफ द डे अगर आपसे पूछा जाए इसका रिजल्ट जो है, आप क्या समझती हैं? I think it has made me a better person in the way that I see that if there is no religion actually teaches you to be a bad person, go and kill and all that. It's all man-made things. If I find somebody annoying and I want to kill them, that's because of me, not because of what the religion teaches or not because what their religion is. There's good and bad in every person. There's good and bad in every religion. And it's us who choose. It's us who make the decision. Because my dad always said कि अगर अल्लाह ने आपको ब्रेन दिया है और इसलिए आपको अशरफुल मखलूकात का स्टेटस दिया है ताकि आप सोचो, आप इवेल्युएट करो. तो आई थिंक ये सब कुछ करने से, रिलीजियस स्टडीज करने से या कंपेयर करने से, जो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट every religion teaches peace, and whatever is negative is because of our own hatred towards other people. If we eradicate that part, if we take out that part of the negativity, the world will be a better place. अगर आप कहते हैं आप एक सेक्ट से हैं और मैं दूसरे सेक्ट से हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हम सब ने अपनी कब्रों में जाना है, हम सब ने अपने लिए आंसरेबल होना है. आपने मेरे लिए कोई जवाब नहीं देना, मैंने आपके लिए कोई जवाब नहीं देना. तो why is that a problem? Why can't we live and let live? So I think that had made me a very calmer person. And if somebody is coming and saying, okay, my religion teaches this, I tell them, good for you. You should follow that. As long as you're not shoving it down my throat and I'm not shoving my beliefs down your throat. यानी इस पे हम कह सकते हैं कि अपना दीन छोड़ो ना और दूसरे का छेड़ो ना. बिल्कुल. अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मैं असल में हम जिस माशरे में ज़ाहिर है डाइवर्स कम्युनिटी है, मल्टी जो है आइडेंटिटीज़, नेशनलिटीज़ यहाँ पर आबाद है, हाउ कैन वी बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन द डाइवर्स कम्युनिटी और डाइवर्स रिलीजन? I think by respecting each other, by letting people who they are. हम तो अपने forget about external, like देसी communities में हम अपने लोगों को ही नहीं छोड़ते. पुप्पो को मसला है, चाचू को मसला है, किसी और अंकल से. So कि वो उसके बेटे ने ये क्यों किया, उसकी बेटी ने ये क्यों किया. Why can't we just let people be? You don't know what is going in people's head. आजकल mental health इतनी prevalent है. हम लोग सोचते नहीं है कि हमारे एक कमेंट की वजह से कोई कितना बुरी तरह से हर्ट हो सकता है. तो और अगर कोई
कोई स्टेप ले रहा है वो क्यों ले रहा है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है. We never bother asking about that. So if we just leave people and be there when they need us, I think the world will be a better place. ये बड़ी अच्छी बात की आपने, फुफ्फो का, चाची चाचा का, या ये जो रिलेशनशिप इनके अंदर जो दरारें पैदा होती है, यहाँ तक होता है कि जनाब छोटी छोटी बच्चियों को और बच्चों को जो है वो एक दूसरे से अटैच कर दिया जाता है कि जनाब ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, और इसका जो है वो यानी कबल अज वक्त ही अभी वो परवान भी नहीं चढ़े, उस एज में भी नहीं आए कि उनका कोई रिलेशनशिप हो, कोई मैरिज मामलात हों, लेकिन पहले से वो चीज़ें तय कर ली जाती हैं। तो आप समझती हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है? Nahi. As a scientist, I'm like, don't do that. You're messing up next generation. ठीक है, मेरी बहस हुई थी इस पे किसी रिलेटिव से कि ये तो अल्लाह का करना है, पर अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है ना. Yes, back then कम मुसलमान थे, तो इसलिए they were doing all this, you know. As the population increased of Muslims, it's okay to go out. अब the thing is, it's not anymore religious or anything. अब वो सिर्फ अपनी properties को सिर्फ अपने family में रखने के लिए they do all this, कि चाचे मामे के बच्चे से शादी हो जाए. But I think you are messing up generations. इतने genetic, आप अभी नहीं, चलो आप you won't see it in the next generation, but the generation after that, it will come out eventually. And genetic faults इतने होते हैं, ठीक है, जो non cousin couples हैं उनमें भी होते हैं, but for me I think there should be a medical test that should be done to see what genetic issues can arise. तो I don't think so this is a good idea, especially. And अगर आप बचपन में रिश्ते तय कर देते हैं, and for example you don't have any genetic issues, but that's wrong, क्योंकि आप उन बच्चों से उनका right ले रहे हैं to choose who they want to spend their lives with. This is something I said, you know, when my father passed away, I was still in the university, my sister was in the university, and everyone was like, hi बेचारा बेटियों की शादी देख के चला जाता, like it was not in my dad's hand to go or not to go. But then suddenly everyone was like, इनकी शादी कर दो. And I felt like फारिग कर दो was the word they used. And I was like, what do you mean फारिग कर दो? My father brought us up like princesses. You know, we were not a burden on my father or my mother. And my mother took a stand at that point. Lekin, after a while, my mother, who was also grieving, it became quite hard. Then somebody who was dying, they were like, nahi, meri aakhri ख्वाहिश hai, tum शादी कर लो. At that point, I had to be very strict. And I said, and I think after that, a lot of relatives stopped talking to me because they were like, बहुत बदतमीज है. I actually told them, आपकी, you know, once you die, that's it. The person who is saying कि आप शादी कर लो, वो भी अपनी जिंदगी में जाएंगे. पर मैं जिससे शादी करती हूँ, सफर तो हम दोनों को करना पड़ेगा ना. हम लोग अभी जल्दबाजी में शादी कर लें. I don't think so it's a good idea. ये जो blackmailing होती है, especially relatives की, दादी, नानी, चाची, या जो भी whoever is dying, कि please आपकी ख्वाहिश है. I don't think so anyone should fall for that. क्योंकि वो लोग तो चले जाते हैं, एंड पे सफर कौन करता है, आप या आपके बच्चे. एक ट्रेडिशनल जो है वो जाहिर है बंदा रवायती जो है वो, या ट्रेडिशनल एक ऐसे सिस्टम में जुड़ा होता है, वो कह देते हैं जी ये इनकी दादी जो है मरते मरते वसीयत कर गई ये लड़की जो है फलां लड़के से. यानी वो उनसे नहीं पूछा जाता कि क्या उनकी आपस में हमाहंगी है, जहनी हमाहंगी है, वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं. तो ये चीजें भी जाहिर है हमारे माशरे से खत्म होनी चाहिए. आप समझ रही? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एंड पे सफर चले लड़का तो फिर भी यू नो ही हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. फर्स्टली हम लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करते, वो पॉकेट मनी के लिए डिपेंडेंट होती हैं अपने हस्बैंड्स पे. सेकेंडली द वंस हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज वेल, वो भी अपनी कमाई जो है अपने हस्बैंड के अकाउंट में डाल रही हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. You know, you have to be financially independent so you know that you can walk out, because even the religion gives you the right to walk out when you're not happy in a relationship and your mental health. And there are a lot of women who say हम बच्चों के हाथ relationship में रह रहे हैं. Why? That is affecting the children as well. बच्चों की mental health आप देखें, अगर बेटा होगा तो he will grow up with the mindset that he can abuse women. बेटी होगी तो she will grow up with the mindset that she will have to suffer the abuse. So why are you doing that?
in my opinion, I think I love how the whites here are, that they break up at the right point and then they're cordial with each other. They don't have to be best of friends, but they're nice to each other. They go to football games together to watch their kids play. They have picnic dates or whatever with each other. They bring their other halves as well, the new partners they are with. Why can't Pakistanis not do that? Why can't Desis not do that? हाँ, अभी तो It will देखें take रेहाम रेहाम खान साहिबा जो है वो अलग हुई है। वो कहते हैं कि इमरान खान के अंदर ये भी फाल था, ये भी नेगेटिविटी थी, ये भी थी। ये चीजें आप समझती हैं कि हमारे माशरे के अंदर ये भी मायूब हैं। आप एक साथ रहते हैं, इतना टाइम गुजारते हैं और फिर एक दूसरे के जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। खामियां तो सब में होती हैं, आप में भी होंगी, मेरे में भी होंगी, जो किसी को पसंद आएंगी, किसी को नहीं पसंद आएंगी। अगर आपको नहीं पसंद आ रही, आप अलग हो जाएं, और जब आप अलग हो गए तो फिर डिग्निफाइड तरीके से अलग हों। मैं नहीं कह रही कि आप बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं अपने एक्स के साथ, पर अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो उसकी खातिर आप एक अच्छे तरीके से मिलें। जब आप कहीं मिलें, अच्छी सलाम दुआ करें, इससे ज़्यादा आपको बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के दिमाग में भरना कि तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी माँ ऐसी है, वो बच्चों का इट messes up the children's mental health, और फिर वो बड़े होकर उनके रिलेशनशिप्स में इशू आते हैं। ये साइकोलॉजी में इट्स लाइक दैट, इट्स चाइल्ड साइकोलॉजी, यू मेसिंग अप योर ओन चाइल्ड फॉर योर ओन बेनिफिट। आप लोग फिर अपनी जिंदगी में चले जाओगे, बट द चाइल्ड विल हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस forever, and their partner and their children, so it's a cycle that goes on. यही यही जो रिजल्ट है, नताइज हमें जो है फोर्स मैरिजेस के हवाले से भी जो है यहाँ पर काफ़ी इश्यूज जो है बरतानिया के अंदर जो हमारे लोग आबाद हैं उनके अंदर दिखाई देती हैं। तो इसके हवाले से भी कोई आपके कोई केस स्टडी या कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो शेयर कीजिएगा। बरतानिया में जो है वो मैंने देखा है कि यहाँ के जो स्पेशली पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि बहू पाकिस्तान से आए, जो यहाँ पर आकर एक एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्लेव बन के उनके साथ रहे, कोई काम ना करे। वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड, एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, डॉक्टर्स हैं, मैरिड हैं यहाँ पर, as soon as I tell them to get their marriage registered, their husbands tell them to block me. पाकिस्तानी लोग अपनी मैरिजेस यहाँ पर क्यों रजिस्टर नहीं कराना चाहते? क्योंकि उनकी वाइफ्स को राइट्स मिलेंगे, and they don't want that. I see so many women जो जिनका करियर पाकिस्तान में फ्लरिश कर रहा था, यहाँ पर आके वो सिर्फ रोटियां बना रहे हैं अपने सास ससुर के लिए। Sometimes they're being told कि you'll have a lavish life, और यहाँ के घरों का तो आपको पता है, 3 बेडरूम हाउस है, 1 टॉयलेट है, 1 शावर रूम, and that's it mostly, and no storage as well, and उसमें 4 families रह रही हैं। You can't do that. That's criminal, I think. When somebody gets married, they should get a house, or don't get married until you can afford one. And then these bahus are coming and they have to force, they know nothing about their rights. They're afraid to leave. They're being blackmailed कि तुम कुछ करोगी तो हम तुम्हारा visa cancel कर देंगे. So I think every woman who is getting married into a family that lives abroad, she should read up on her rights in this country. This country gives you a lot of rights, and I think women should use that to empower themselves. सना, आपने वीमेन राइट्स के हवाले से भी काम किया है, तो इस हवाले से आपको क्या लगता है? हमारी कम्युनिटी की, हम अगर एशियन साउथ एशियन बैकग्राउंड से बात करें, तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है ख़वातीन की? क्या इश्यूज आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं? जब मैं स्कूल में थी तो आई रिमेम्बर एक दफ़ा एक्चुअली मैं किसी क्लास में गई थी, वो छोटे बच्चे थे, एंड उनसे किसी ने पूछा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? So everyone was saying doctor, engineer, lawyer, and there was this one girl and she said मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और इसलिए ताकि मुझे अच्छे प्रपोजल्स आएं। And she was a very young kid, she was about 10-11 years old. But हम इतनी छोटी सी एज से बच्चों, स्पेशली लड़कियों के दिमाग में डाल देते हैं कि शादी इज द अल्टीमेट गोल, बच्चे पैदा करना इज द अल्टीमेट गोल, बिकॉज दैट इज द होल वुमनहुड दैट विल मेक यू। सो हम ग्लोरीफाई करते हैं, हम रोमांटिसाइज करते हैं। अगर आप देखें द हॉरर्स ऑफ अ लेबर रूम, द थिंग्स women go through when they're pregnant, nobody talks about it. Even movies में भी वो इतना अच्छा
आप वो सज धज के बैठे हुए हैं और आप दीदी तेरा देवर दीवाना गा रहे हैं एंड ऑल दैट, बट दैट्स नॉट रियल लाइफ. You know, nobody talks about it. There's so many things probably I don't even know because I've not gone through it myself. But जब बच्चों के दिमाग में आप ये एम्बिशन नहीं डालते कि बड़े होकर आपने कुछ करना है, आपने अपने पैसे कमाने हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो उनका तो वो अल्टीमेट गोल होता है. एंड आई सी गर्ल्स, the moment they turn 18, they just want to find a suitable boy and start looking. And there was somebody who told me 25 के बाद तो लड़कियां एक्सपायर हो जाती हैं. I don't know what that meant. कि आपकी शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है 25 के बाद, आपको सिर्फ डिवोर्सी या विडोड 40-50 years old uncles मिलेंगे. That's not the point. Like everyone keeps telling me that I should get married, and I don't want to because I think I'm quite happy like that. And you know, this is, women are not biological vessels to produce babies. That's a part. And that's what somebody wants to do. Like there's so many women who are child free by choice like me, but they are being forced into producing kids. और अगर वो नहीं करते तो फिर divorce and other issues, and फिर जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो they don't like the kids, कि फिर वो उनको नाशुक्री कहना शुरू हो जाते हैं. Not everyone has the same goal. So I think women should be taught कि आप जो the same things men are taught. You know, पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद find a job. You should be stable. You should be financially stable. इतनी income आ रही है, उसके बाद decide whatever you want to do, because then it gives you the right and the freedom to leave if you are in a toxic marriage. अगर आप अपने husband पे dependent हो financially, तो obviously you will be worried about your kids as well. अभी देखें हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए हैं पाकिस्तान में, जो इन्फ्लेशन हुई है, उसकी वजह से आई हैड बीन रीडिंग थिंग्स वेयर पीपल आर सेइंग हमारे पास बच्चे के दूध के पैसे नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर वुमेन हु आर डाइंग टू गो फॉर IVF, एंड IVF इज नॉट चीप. So why can't you maybe adopt somebody and make their life better? But it's very difficult to love somebody else's child as well. पाकिस्तान में देखें वो सिस्टम ये होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रहते हुए बाज़-औक़ात वालिदैन भी आपका बोझ जो है वो शेयर कर लेते हैं, आपको यानी फीड कर देते हैं, या कोई ना कोई फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाती है. तो वो नहीं समझते कि यहाँ पर ज़ाहिर है एक डिफरेंट सिनेरियो है. यहाँ पर लोग जो है अपनी जॉब्स भी कर लेते हैं, अपने आप को जो है वो वेल डेवलप भी कर लेते हैं, सेटल डाउन भी कर लेते हैं. वहाँ पे काफ़ी आपको फ़ायदा मिल जाता है जॉइंट सिस्टम के अंदर या उस माशरे के अंदर. Yes, you do get that benefit, but then उसके साथ उसकी भी toxicity आती है, जहाँ पर you know we hear about सास बहू के झगड़े all the time. Not only that, then you know you have uncles and relatives who are very how do I say, abusive towards children. Like there's a lot of child sex abuse involved. कि आपको कोई अंकल आ रहे हैं inappropriately touch कर रहे हैं, you know they are forcing you to do things which you're not interested in doing or you don't know. तो आई थिंक जहाँ पर जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स हैं वहाँ पर उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि if there is a working woman who leaves her child with her mother-in-law and brother-in-law, but if somebody abuses the child, how would she know? And then फिर उसको चुप कराना कि नहीं आपने नहीं बोलना, you know, that's another issue altogether. चले ये हो गया हमारा टाइम जो है वो क्योंकि कंप्लीट होने वाला है. सना, आप कोई अपना मैसेज जो भी देना चाहें तो उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे. मेरा मैसेज मेनली विमेन के लिए होगा कि प्लीज empower yourself, take a stand for yourself. Nobody else will do if you won't. Make yourself financially independent. Do not use marriage as your ultimate goal or producing babies as your goal. It will come. And no, the biological clock does not stop ticking until you hit the menopause. You can have kids after that, you know, until then. Even in the 40s, having kids after 30 or whatever is a myth कि it causes issues. आप अपने आप को independent करो, and then you won't be dependent on anyone, and then you can look after your kids as well. So I think that's my message for people
be independent and be more resilient and coexist, be kinder. थैंक यू सो मच सना कारदार के जो है एहसासात ख्यालात और जज्बात आपने सुने हैं। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। आपके गिरदो नवा के अंदर कोई शख्सियात, कोई पर्सनैलिटीज़, कोई ऐसे लोग जो कि डिफरेंट जो है वो फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट शोबाजात के अंदर जो है काम कर रहे हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो आप उनको भी हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। हमारा प्लेटफॉर्म जो है ZMC नेटवर्क का उनके लिए हाजिर है। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।